Once again, good morning and greetings on International Women's Day, and a warm welcome to today's panel discussion, which is on gender equality today for a sustainable tomorrow, breaking stereotypes, hosted by SOS Children's Villages of India. This virtual session will revolve around experiences made during individual journeys that will serve as motivation to mitigate challenges around that so important word, balance. Before we begin this discussion and interaction, it is with pleasure that we introduce our esteemed panelists to you. Mr. Sumantakar, Secretary General, SOS Children's Villages of India. Srimati Radha Rathuri, IAS, Additional Chief Secretary, Government of Uttarakhand. Ira Singhal, IAS, Deputy Commissioner, Office of the Divisional Commissioner, Delhi. Ms. Neeru Ahuja, Partner, Deloitte, India. Ms. Shama Jain, SOS Mother. Ms. Chandrama, Caregiver, Family Strengthening Program. A very warm welcome to all of you and thank you for taking out the time to be with us today. I now would like to briefly introduce Mr. Sumantakar, who will initiate the session. Mr. Kar brings with him over 30 years of experience in the field of alternative care. He has conceptualized and implemented several development projects at SOS Children's Villages of India, including leading the tsunami operations in the south of India between 2004 and 2007. It was the largest ever emergency program undertaken by the NGO so far. Mr. Kar was also part of the SOS International Working Group in Alternative Care. He supported a couple of member associations in Asia in shaping their emergency programs. Over to you, sir. Thank you. Sarah, good morning and happy Women's Day. And particularly, if you look at the kind of, and I welcome all the panelists, those who are present today for the discussion, and express our sincere thanks on behalf of all the members of SOS family. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sumanta sir. Would you like to begin the session with your inputs on the subject of the panel discussion, sir? Yeah. So today's subject of panel discussions is gender equality and for a sustainable tomorrow. And particularly, if we look at the work of SOS Children's Villages of India, and particularly post-pandemic, the work of our mothers, particularly, and in SOS family, and also the caregivers in our family strengthening program or different care solutions which we offer for the children who have lost parental care or at the risk of losing parental care has become much more difficult. At the one hand, there is a need to look after the health aspects of the children because there was so much of uncertainty, anxiety all around. And at the same time, also take care of the children who are there because of lockdown 24/7 at family homes or at home. And that time, the work has become much more difficult. And because of lockdown, also many of our caregivers, particularly in family strengthening programs, they lost their livelihood also. There was a break in education and nobody knew how the children, when the children will back in school, and with limited access to online education, it was all the more difficult. There was always an issue when children are all confined to one place without proper routine, not being able to be in touch with their friends. There was a high risk of child safeguarding issues. Under these circumstances, I think our mothers, our caregivers, and they played a very, very critical role. And that is how
Many of them moved a step ahead and in discharging their roles and responsibility. Particularly the mental health well-being of our children and were also areas of concern. So that way, at that aspect, I think women play a very, very critical role. And if today's discussions, when you talk about gender equality, I think what is important is how can we empower our women, particularly our mothers, our caregivers who work 24/7 with the children. How can we build their skill so that they're able to take care of their children better? It's not all our caregivers, mothers, it is also the girls. And in our program, how can we provide them the equal opportunity? How can they have the same facilities, same course? So it has been our endeavors in SOS Children's Village to provide equal opportunity for irrespective of any gender to our children. And that is where our mothers and caregivers play a critical role. Particularly during this pandemic, we have seen many of our shuttled caregivers, they also either temporarily lost their job or they also their salary or the got slashed. And some of the professions or vocations they are pursuing and they were no longer the job opportunity were there, particularly in the hotel industry, retail business. So that also gives us a reflection, how do we prepare our children and youth, particularly how we make them more resilient to face these unprecedented and unforeseen incidents if it comes in future. So skilling and reskilling is we did some of our youth and prepare them for the current job opportunity. While if you look at the future aspects, there is a need to how do we support our youth, particularly our girls, with the new generation skills, and how do we prepare them for the vocations and professions which will give them better employability. It has been our efforts in SOS Children's Villages that each and every youth, irrespective of gender, should have at least one employable skill, at least minimum basic education up to class 12, minimum good communication in English, IT skills, as well as appropriate social skills. And once they are economically rehabilitated, then only we encourage them for social rehabilitation in terms of marriage. So if today's context, if you look at it, I see all our girls should have appropriate skills required for 21st century generation skills, and they should aim at economic rehabilitations, and that will make them much more empowered. So, Sarah, what I would like to share here is that, first of all, I would like to congratulate all our mothers, caregivers, all our girls, and the way they have faced the pandemic, the way they are looking ahead for the future, but still a lot more needs to be done at our end. Thank you. Over to you, Sarah. Thank you so much, Mr. Kar. That was a very good insight into the challenges that women and children have been facing, especially during the pandemic. Thank you once again, Mr. Kar.
Our next esteemed panelist is Srimati Radha Rathuri. She has been experiencing some technical issues in joining, but I will just ask my colleague Christo whether she will be able to join right now or whether we can move on to the next panelist and perhaps rope in Radha ji later on. Christo, any update? So Radha has asked us to move ahead with the discussion, and she'll join in a bit. All right. She's facing some difficulties. Thank you so much, Christo, for that. So moving on, we will now move further to Ms. Shama Jain, SOS Mother, and Ms. Chandrama, caregiver served by the Family Strengthening Program. And this is a very interesting interaction that we will have with both the ladies. And they will be actually talking about their respective experiences as part of the journey with SOS Children's Villages of India. So to begin this interaction, I would like to introduce firstly Ms. Shama Jain, who actually hails from Indore. And prior to joining SOS Children's Villages of India, she worked with Kasturba Gandhi Sanstha for 2 years. And thereafter, she joined SOS Children's Villages at Greenfields and later on moved to Bhavana. She has settled around 40 children in her care, and today she's looking after 9 children in the family home. It is the result of her hard work and persistence that most of her children are doing well in their lives. One of her daughters is in fact currently posted as the DSP in Punjab Police. Congratulations, Shama ji, and welcome to this panel discussion. तो हम शुरुआत करते हैं आपसे एक छोटे से अनुरोध के साथ थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइएगा अपने शब्दों में श्यामा जी। थैंक यू मैम। मेरा नाम श्यामा जैन है और मैं इंदौर से हूँ और एक छोटे से परिवार की हूँ, जिस परिवार में हम 7 भाई बहन थे, मम्मी पापा थे और बस मेरा एजुकेशन वहीं से शुरू हुआ है और मैंने पढ़ाई के बाद 12th किया वहीं से और 12th करने के बाद फिर मैं छोटी सी वहीं पर एक संस्था में जॉब करने लगी। तो उसी जॉब के दौरान मैंने बहुत कुछ कोशिश किया, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था जॉब करने में, लेकिन मेरा ये था कि मैं जो चाहती थी वो वहाँ मिलता नहीं था मुझे, क्योंकि वो सब वर्किंग वुमेन्स थे, जो भी थे, मदर फादर सब मजदूरी करने वाले थे और अनपढ़ थे, उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, तो वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाते नहीं थे। क्योंकि मैं बालवाड़ी टीचर थी तो मेरा ये था मानना कि हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन अगर वो मैं बच्चों को बुलाती थी पढ़ने के लिए तो वो लोग मजदूरी में ले जाते थे और मजदूरी जब मजदूर करा के लाते थे तो वहां वो ड्रिंक व्रिंक कर लेते थे, तो ड्रिंक करके वो बच्चों को वैसे जैसे फादर लोग सो जाते हैं इसी तरह वो पड़े रहते थे। अब मैं उनके घरों में भी विजिट करती थी जाके, तो मुझे जाके मेरा कहना ही था कि मैं अगर आप नहीं भेज सकते, मैं आपके पास जाके आपके बच्चों को एजुकेशन दूंगी वहां पर। और मैं कोशिश करती थी उनको समझाने की कि किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दे, कुछ बच्चे थोड़ा सा आगे कुछ ना करें तो कम से कम एक साइन करना सीख जाएं अपने। लेकिन वो लोग, उनके जो पेरेंट्स थे, क्योंकि वो बिल्कुल अंगूठा लगाते थे वो लोग, तो उनको इस चीजें उनको अच्छा नहीं लगता था और मुझे दुख होता था इस चीज का। अच्छा, धन्यवाद श्यामा जी अपने बारे में कुछ बताने के लिए। और आपसे अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने संस्था को इतना मतलब इतने साल दिए, जैसे शायद कितने साल हो गए आपको यहाँ? 30 साल हो गए होंगे आपको? 33 साल हो गए मैम मेरे। 35 साल हो गए आपको? 33, तो ये 33, अच्छा 33 इयर्स। yes. तो इतने सालों बाद, इतने सालों के दौरान आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने इन चुनौतियों का सामना करा? आपके जो अचीवमेंट्स हैं वो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताइए। मैम चुनौतियां तो बहुत रही हैं, क्योंकि जब मुझे घर मिला यहाँ पर
घर मिला तो डिफरेंस, अलग अलग बच्चे थे, अलग अलग फैमिली से थे, तो बच्चों को सबको एक अपने सोच में ढालना तो बहुत बड़ी चुनौती होती उस टाइम तो, क्योंकि सब बच्चे सब अपने बाहर का सब कुछ सीख के आते हैं, लेकिन जब हम अपने में ढालते तो पहले हमें उनके अंदर ढलना होता है कि बच्चा हमें अपनाए। जब हमें अपना लेता है दिल से तो वो हमें ढालने में देर नहीं लगती उनको। इसी तरह हमने बहुत चैलेंजेस करे कि बच्चों को पहले अपने में हम गए उनके अंदर कि वो मुझे अपने तरफ अपना माँ समझे। जिस दिन उन्होंने माँ शब्द बोलना शुरू किया है तो उसी दिन मुझे लग गया कि अब बच्चा मेरे अंदर ढल गया। तो ये चैलेंज और बच्चों की अलग अलग डिमांडें, बच्चे को पूरे टाइम किसी को बाहर रहना, किसी को अंदर रहना, किसी को घूमना, तो और अचीवमेंट मैंने अभी तक मैम 40 बच्चों की परवरिश कर चुकी हूँ। इसमें से मैंने अभी तक 20 बच्चे हैं जो मेरे, जिनकी मैंने मैरिज कर दी है, और सभी शादीशुदा हैं, मतलब सबके एक एक दो दो बच्चे हैं। और जो एक मेरी बेटी है वो डीएसपी है पंजाब पुलिस में। आज उसे सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले मेरे पास उसका ही कॉल आया और उसे मूवमेंट से विश किया मुझे, तो मुझे बहुत प्राउड हुआ, मुझे बहुत खुशी मिली। फिर बोले मम्मा मैं आपके पास, मेरे पास टाइम नहीं होगा इसलिए मैं पहले विश कर रही, क्योंकि मुझे 3 दिन से मैं रोज मीटिंग अटेंड कर रही हूँ। धन्यवाद ये सब बताने के लिए श्यामा जी। मेरे ख्याल से ये जो आपने चुनौतियां हमें गिनवाई हैं और जिस तरह से आपने इन चुनौतियों का सामना करा है, बहुत सीख मिलती है इससे। और एक और चीज आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के समय में आपको लगता है कि किस तरह से समय औरतों और लड़कियों के लिए बदल रहा है, बदल चुका है? क्या बदलाव आया है आपके हिसाब से? मैम अगर हम बच्चे में बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं देखेंगे कि बेटियां भी बेटे के बराबर हैं और बेटे भी बेटियों के बराबर हैं, अगर हम उनको दोनों को एक समान देखेंगे और उनको हमेशा यही शिक्षा देंगे कि बेटा गर्ल से तो क्या होगा, लड़की हो, जो लड़के करते हैं वो लड़की भी कर सकती है, और लड़के को यही शिक्षा देना कि आप बाहर निकल रहे हो तो आपके लिए घर की बहन के समान ही बाहर की जो लड़के हैं वो भी इसी तरह आप उनको अपनी नजरों से देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किलें होंगी। और जैसे कहते हैं कि जो औरत होती है वो घर भी संभालती है और बाहर का जो काम है वो भी संभालती है, तो आपको लगता है कि एक एडिशनल चैलेंज सा बन जाता है, एक और चुनौती सी बन जाती है जो बैलेंस मेंटेन करना होता है दोनों चीजों के बीच में? मैम चैलेंज तो है इसमें, कुछ हम घर को देखने के साथ साथ अपने लिए थोड़ा कदम बाहर भी निकालना हमारा जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो लोग यहाँ पे हमें देख रहे हैं, इस वार्तालाप को सुन रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, उनके बारे में, उनके लिए आपका कोई संदेश है? मैम मैं सभी महिलाओं को सिर्फ यही कहूंगी कि आप अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए। अगर हम अपने लिए समय थोड़ा सा निकालेंगे और अपना हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो भी हम अपनी माँ को देख के अपने परिवार में अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे और उससे खुश रहेंगे, और उस समाज में भी उसी तरह से उनका योगदान रहेगा। तो समाज अगर स्वस्थ और खुश है तो देश भी हमारा इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरह हमारी लड़कियां आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्यामा जी। और अब हम आगे चलते हुए चंद्रमा जी के पास जाते हैं। चंद्रमा जी, आपका मैं एक अपने शब्दों में आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप स्वयं अपना परिचय दें। नमस्ते मैडम, मेरा नाम चंद्रमा है। मैं बेंगलुरु से रागीगुड़ा से बोल रही हूँ। रागीगुड़ा से बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ मैडम, मेरा तो अभी SOS से मुझे मदद मिली है आगे बढ़ने के लिए। बहुत मुझे तकलीफ था, शादी हो जब मुझे एक 3 साल का बच्चा था, बहुत मुझे तकलीफ था। वो टाइम पर जाने आने के काम पर कोई मुझे मदद करने नहीं था। वो टाइम पे मैं घर के काम को जाने आने के टाइम पर कुछ उधर आदमी लोग जम के थे, क्या कर रहे थे जाके देखने गया था मैंने। वो टाइम पर उधर ग्रुप चलता था, क्या ग्रुप चल रहा, क्या की मीटिंग चल रहा, बोल जब भी SOS ग्रुप था नया मुझे। वो टाइम पर मैं सोचा ये क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ
मुझे हेल्प मिलेगा बोल के मैं उधर गया। बाद में पूछा उधर कोई आदमी से क्या कर रहे हैं इधर, ये ग्रुप कर रहे हैं इधर, SOS का ग्रुप कर रहे हैं बोल के। मैं बोला ऐसा मुझे अकेले के लिए होता है देखिए। बोले बाद में क्या बोला, नहीं नहीं वो सर से बात करना है बोला, SOS के सर आते उनसे बात करिए करके। बाद में उधर ही ठहरा था, एक आधा घंटा रुक के बाद में मीटिंग हो गया, उनसे मैं बात की रही थी। सर ऐसा सब लोग को कुछ हेल्प कर रहे हैं ना बच्चे लोग के लिए, मुझे थोड़ा तकलीफ है, मुझे भी थोड़ा हेल्प चाहिए बोला था। बाद में मुझे सर ने बताया है आप अकेले के लिए नहीं होगा, आप घर किधर रहते हैं, घर आकर देखना पड़ेगा, आपके घर देखेंगे, बाद में आपके आजू बाजू आदमी लोग को देखेंगे, एक 15-20 कट्टा आदमी लोग रहते हैं उनको ग्रुप करके हम मदद कर सकते हैं बोला था। बाद में मैं क्या किया, अकेले के लिए नहीं होता, सभी लोग जमना चाहे तो सूची में सोच के सर आप बाद में मुझे फिर भी कब मिलेगा पूछा था, मैं इधर आते रहेंगे बोला था। बाद में घर चले गई, मैं काम करने जाना था, टाइम हो गया, बच्चे को छोड़ के आई थी, मैं घर के काम पर चले गई थी मैं। बाद में फिर भी शाम पड़ते घर को जाके सोचने लगी क्या ऐसा सर बोला था क्या करना है, मैं भी उनके पास कुछ पता नहीं चला था पूछ के। बाद में फिर भी दूसरा दिन काम पर जाने के टाइम पे उधर जाके पूछा, मैं सारे इधर आता ना, उनका कुछ फोन नंबर तो दे दो मुझे, कुछ बात करना करके बोला उसने, ऐसा सर उधर दूर रहता है, उधर जाके उनके मिलके उनके बात करके बाद में हमारा घर के पास बुला के आई थी, बुला के आके हमारा एरिया में सब लोग को थोड़ा मिला के, बहुत लोग गरीब लोग रहते हैं उधर, बच्चा लोग बहुत काम को जाते थे उधर, और रोड जाने से सफाई करने काम को जाते थे, बहुत लोग मिलाता है, खट्टा बनाया था उधर, खट्टा बनाए बाद में तो सर ने बोला ठीक है मैम, इतना 15-20 एक एकदम 12-13 लोग बच्चे मिले थे उधर, फैमिली लोग, बहुत गरीब लोग थे उधर, औरत लोग पूरे मिलाकर इकट्ठा बनाकर उधर ग्रुप किए थे। बाद में मुझे भी थोड़ा सा हेल्प करे थे उधर। ओके। और चंद्रमा जी, आप संस्था के साथ 2014 में जुड़ी, यस मैडम। जो स्वयं सहायता ग्रुप है उसके द्वारा। हाँ तो उस टाइम आपने किन चुनौतियों का सामना करा जब आप इस ग्रुप की सदस्य बनी? तो सदस्य में उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। यस मैडम। कोई आदमी बेवा रहते हैं, विडोस रहते हैं, उन लोग के लिए इकट्ठा किया था। वो टाइम पर वो लोग बहुत तकलीफ पड़ते थे, घर दोनों शेड में रहते थे, घर भी नहीं था उनको आने के टाइम पर, सुबह सुबह भागते थे। उधर थोड़ा सा घर के बाजू उधर झाड़ लोग रहते थे, सांप रहता था, बहुत तकलीफ पड़ते थे उधर, पानी के लिए बहुत तकलीफ था उधर, और बच्चे लोग के पहनने के कपड़ा सीधा नहीं रहता था उधर। हमारा घर से थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था, गवर्नमेंट स्कूल था उधर, बहुत लोग को बहुत तकलीफ था, कोई मदद करने वाला नहीं था उधर। बाद में हमें सर से बताया देखो सर ऐसे लोग आते हैं, बहुत लोग तकलीफ पड़ रहे हैं इनको, इस वजह से मिला के जब भी बात करके बाद में ग्रुप बनाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उधर उन लोग से कुछ प्लान करके जमा के रखा था। टोटल अभी आदमी आके 68 आदमी लोग पेरेंट्स लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, और बच्चा लोग आके पूरा अभी टोटल आके अभी बच्चा लोग 180 पर बच्चे लोग पूरे बिरागी गुड्डे में, बच्चे लोग पूरे भी उधर, बच्चे भी ग्रुप होके हैं, मुझे भी थोड़ा हेल्प हुआ है, और बच्चे लोग को मदद करते गया मैंने, और 6-7 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हैं। और जब आपने ये स्वयं सेवा ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, तो कभी कभार बड़ी मुश्किल आती है कि आप अलग अलग लोगों को आपको एकत्रित करना पड़ता है, एक ग्रुप में उनको एकत्रित करके उनको साथ में चलाना, उनके साथ चलना, वो थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल इसलिए भी पड़ती है क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी जिंदगियां अलग हैं, उनकी चुनौतियां अलग हैं, उनके संघर्ष अलग हैं वैसे। तो वो आपने कैसे किया? और जैसे आपका अपना घर बार था, आपको ये भी करना था, आपको शायद अपना घर भी चलाना था, तो इन सब चीजों को आपने इकट्ठे कैसे संभाला? बहुत मुझे तकलीफ था, वो टाइम पर काम पर जाती थी आती थी, और मेरा घर का प्रॉब्लम भी मुझे बहुत था, क्या कहते मुझे मदद करने कोई नहीं था उधर, मेरा भाई लोग हैं, सभी लोग दूर दूर रहते थे, मदद हेल्प करने कोई नहीं था उधर। टाइम पर मैं क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप करने के लिए SOS से वो लोग पूछाता है कैसा करना, पूछ के उनसे मैं बाद में वैसा क्रिएट किया था काम में, और बच्चे लोग के लिए जमाने के लिए, और एरिया में बहुत तकलीफ था उधर, बहुत तकलीफ पड़ा मैंने उधर, उतना आसानी से मुझे काम नहीं हुआ उधर, बोल के देते थे मुझे ऐसा करना है, बोलना है, आदमी से बात करना है, और बहुत लोग उधर लैंग्वेज दूसरे आदमी लोग थे, तेलुगु वाले, तमिल वाले, हिंदी वाले सभी लोग रहते थे उधर, स्लम रहता था उधर, बहुत तकलीफ था उधर आने जाने के टाइम पर। मुझे मैं भी उधर ही थोड़ा दूर में थी, मेरे घर भी था, शेड में थी मैं वो टाइम पर। तो आपने इसका जैसे आप कह रहे हैं कि अलग अलग लोग थे वहां पर, अलग अलग
उनकी भाषाएं थी, मतलब बोलचाल भी अलग था, रहन सहन अलग था। तो इन सब लोगों को एकत्रित करना, मतलब एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो आप कह रही हैं उसमें शामिल करना और उनकी मदद करना, तो उसको आपने कैसे किया? आप, जैसे मैं जानती हूँ कि आपने 68 जो परिवार हैं उनको सक्षम बनने में उनकी मदद करी आपने। तो ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य भी है, क्योंकि मतलब आसान नहीं होता कि आप विभिन्न प्रकार के लोगों को एकत्रित करें, उनकी मदद करें। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो मतलब मुश्किलें पड़ती हैं। तो जैसे कैसे आपने इसको किया, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। मुझे लैंग्वेज अच्छा आता है मैडम, क्योंकि तो मुझे बचपन ही मेरा फैमिली से बहुत तकलीफ पड़ा था मैंने। वो तकलीफ जानकर मैं क्या किया, मैं तकलीफ पड़ा है आगे में और कुछ वो सब अच्छा भी तकलीफ नहीं पड़ना बोल के देखा था मैंने। उसके लिए मुझे लैंग्वेज अच्छा आती है, 6 भाषा आती है मुझे, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और थोड़ा मराठी, सभी बात की लैंग्वेज आती है। उसमें से मैं मिलोकर सभी आदमी से मिलती थी, मैं जाके मिलती थी, बात करती थी, उनसे कुछ तकलीफ समझती थी और मैं उनको इकट्ठा बनाती थी। आदमी लोग मिलते थे पूरे, मिलकर उनको बोलती थी ऐसा ऐसा आदमी लोग जम रहे हैं, आप भी जमो, आपका बच्चा का हेल्प हो जाएगा। आप तकलीफ से आपको कुछ सीख सकते हैं, बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, आपको बच्चे के लिए हेल्प होता है, बच्चा अच्छा आगे बढ़ सकता है। ऐसा पूरा उनके बोल के मैं उनका दिल हिम्मत करती थी, उनकी हिम्मत से बोलती थी, उनको भरोसा देती थी उनको मैं। जब भी वो लोग बात मानते थे, वो बोलेगा मुझे कुछ मिलता है, मिलेगा जरूर, आपका बच्चे का मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको अच्छा, आपसे भी तकलीफ दूर हो जाएगी, आपका बच्चा भी आगे अच्छा बढ़ेगा बोल के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो आपकी यात्रा रही है 2014 से, इससे आपको जो जो मुख्य सीख हैं, जो लर्निंग्स हैं, वो क्या रही हैं? आपके जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? कैसे अपने आप को आपने ढाला, क्या क्या सीखा? थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। पर्सनालिटी तो मेरा बचपन ही मेरा फैमिली से चला मैडम, तकलीफ में देखा, मेरे माँ से देखा है, मेरे माँ ने वखा पढ़ा है, 5 भाई लोग है, कोई नहीं हेल्प ही नहीं आनी। वो टाइम भी मेरे माँ ने तकलीफ पढ़ के मुझे आगे से पाला है, मुझे वही मेरा माइंड में बैठ गया, मैं भी आगे बढ़ना है, कोई सा आदमी के लिए तकलीफ पड़ेगा तो उसको हमें हेल्प करना चाहिए। और हमारा आजू बाजू में बहुत लोग, बाद में थोड़ा लोग संगे वाले आते थे, सिस्टर लोग आते थे, खाना कपड़ा देता था, उधर रोटी देता था और बिस्तर देते थे, चले जाते थे वो लोग। लेकिन ये 2 दिन 3 दिन चलता था, लेकिन लाइफ लॉन्ग हमको हेल्प मिलेगा तो हमें उस आदमी को पकड़ना चाहिए। जब हम क्या के हेल्प एसओएस हमको एनजीओ वाले आए हैं, हमें उनको छोड़ा नहीं है, सब लोग को उनको मैं बताता था, बात करता था, वो कभी भी सार मिलेगा एसओएस से आदमी लोग कोई आता था हेल्प करने के लिए, उनसे हमको इकट्ठा बना के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको आगे बढ़ाया। मैं भी उसमें थी, मुझे थोड़ा हिम्मत आया वो टाइम मेरा लाइफ में, और मुझे तकलीफ बीच में मेरा लाइफ में भी आया, मेरा फैमिली में। मेरा हस्बैंड का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, उसको थोड़ा हॉस्पिटल लेके गया था, उसको बाद में हस्बैंड के लिए तो 2-3 बार हॉस्पिटल एडमिट किया था मैंने, उसको थोड़ा ऑपरेशन, शुगर आ गया था, ऑपरेशन हुआ पैर में, और मैं भी उसको संभाला है, बाद में थोड़ा काम भी करता था, बच्चे को मेरे साथ रखा था। हाँ मैडम, बहुत तकलीफ था। अभी अभी मेरा हस्बैंड मर के 7-8 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। अभी मेरा बच्चा 7वीं क्लास पढ़ रहा है लाइफ में। कोरोना का सेकेंड लॉकडाउन में हस्बैंड मर गया मेरा। वो टाइम पे थोड़ा सेकेंड लॉकडाउन है, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया, जब भी आदमी लोग कोई बाहर नहीं घूमता था। उसके लिए बाद में आजू बाजू आदमी, मुझे एसओएस से कोई मेंबरशिप था, वही लोग मुझे आके सपोर्ट किए, मदर ने, वो लोग मेरे पास आए थे, कभी मुझे फोन करते, मैं बुलाई तो भाग आ जाते मेरे पास, क्या हुआ बोल के, वही लोग मदर लोग मुझे आके हेल्प करके उधर मुझे सपोर्ट किए। चंद्रमा जी, आपके ये जो जीवन और जो यात्रा रही आपकी, इसके बारे में सुनकर बहुत प्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि आपने इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी आप आगे बढ़ रही हैं, दूसरों की मदद कर रही हैं। 68 परिवारों को आपने सक्षम बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा है, उनकी मदद करी है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। श्यामा जी आपका भी और चंद्रमा जी आपका भी, हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। और अभी हम आगे चलते हैं अपने जो नेक्स्ट एस्टीम्ड पैनलिस्ट की तरफ। सो आवर नेक्स्ट एस्टीम्ड पैनलिस्ट इज श्रीमती राधा रातुरी. Radha Rathuri ji is the Additional Chief Secretary, the Government of Uttarakhand, and she leads the departments of higher education, energy, and secretariat administration. She holds a gold medal from both Bombay University and Osmania University, besides a gold medal in mass communication. Radha ji is passionate about the cause of women empowerment,
for which she has dedicated a lot of effort throughout her professional journey. Over to you, ma'am. Radhaji, are you there with us? All right, I think there may still be a problem at her end. Christo, would you be able to throw some light on whether Radhaji can join in right now, or is there... Sarah, I think there's some unforeseen technical problems again. In the meanwhile, do you want to go ahead with the next speaker, the next panelist? I'll check with Radha in the meanwhile. All right, sure. Neeruji, are you there with us? Yes, I'm here. All right. So then we move on to you, Neeru. And before we move on, I would like to give an introduction to Mrs. Neeru Ahuja, partner Deloitte India. And Neeru Ahuja is a global business tax partner and leads the tax brand and communications team at Deloitte India. With over 25 years of diverse experience in corporate and international taxation, her key areas of expertise include corporate tax strategy and planning, tax due diligence, tax and regulatory aspects of mergers and acquisitions, inbound investment advisory, and structuring cross-border transactions. She's also the co-chairperson of the American Chamber of Commerce Tax and Tariff Committee, as well as a member of on the tax committees of the Confederation of Indian Industry, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, and the TDS Committee Ministry of Finance. Over to you, Neeruji. Thank you for joining once again. Thank you so much, Sarah, and good morning to you all, and greetings from me on the special day, Women's Day. So greetings to all my colleagues, all my friends, all the panelists on the discussion today. First of all, I would like to thank the SOS Village team for inviting me. The moment I got the invite, I was very excited and I immediately accepted. And I would like to share a secret with you that I have actually visited one of your villages as a child. When I was a student in my school, we had the opportunity of visiting an SOS village near Delhi. And I actually stayed with one of the mothers in one of the homes with a fellow student. And I experienced what was happening in your organization firsthand. And even at that time, it was inspiring for me. So congratulations to all of you for doing such wonderful work. As I was thinking of today's topic, and what struck me most, today I'm a professional, I'm a chartered accountant. I work in the areas of finance and tax. And what struck me most was the commonality of the values and qualities that are needed by a mother and a working professional like me. How much similarity is there in what we do. I'm also a mother, by the way, so I can compare. What are the qualities we need for excellence in being a mother, for excellence in being a professional and a leader. There are many, many similarities, and I want to talk a little bit about that today. And being a woman, some qualities come to us inherently, जो कि अपने आप हमारे अंदर आती हैं, और जिन्हें जो हमारे strengths हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए as a woman. So one of my first thoughts was team building, nurturing talent and people. Both as a mother as well as a professional leader or a knowledge leader, you need teams around you, you need people around you, and you need to nurture those people. You need to make sure that the team around you is working cohesively
and not going in different directions. You need to train the people. You need to imbibe values in them. You need to share your own knowledge and experiences and guide them through either their personal lives or even their professional lives. So all the dealings we have with people around us, the role is very, very similar of that of a mother as compared to that of a female professional. And this is what I believe women are very good at, and it comes naturally to us. The second aspect, which I thought is similar between a mother and a working professional, is managing our budgets, managing our economics, taking decisions on money matters. A mother has to balance her budget. जो आपको budget मिलता है उसी में ही खर्चा चलाना है. Similarly, as corporate leaders, as women professionals, we have our budgets, we have our targets, we understand financials inherently, and this is what we are strong at. I have rarely seen a women professional who is exceeding her budgets or spending more than what they can earn. So again, this is a common factor, a common quality, I think, which is very important. Another one is multitasking. As a mother, you have to do so many things. You have to take care of the children, you have to provide food, you have to guide them. You have to do so many things at the same time. Similarly, as a professional, you're attending to emails, you're attending to calls, you're meeting clients, you're meeting the authorities. There's so many things you have to do. And women have this ability of doing multitasking and managing, juggling all the balls in the air quite well. And it works very nicely for us. Another very important quality which I really admire in women colleagues is creativity. I think being creative is also something which comes naturally to women in whichever role they are, right? So thinking of new ideas, being creative, being resourceful, थोड़ा सा भी होगा उसमें बहुत बड़ा बना लेंगे ladies. So ये ऑफिस में भी काम आता है, घर में भी काम आता है. तो क्रिएटिविटी जो है एक ऐसी क्वालिटी है which women use very well. So I think these are some of the thoughts, where I thought comparing a mother with a working professional, what is common. I also have some points of advice for if there are any young professionals in the audience या जो भी और ladies हैं कि मेरा क्या advice है. There are some weaknesses or points to improve as well in our own journey, So what are the areas where we can do better? And I reflected on that as well. One of the things which we don't do very much is, bring forward. Sometimes we are shy. I think women are little shy. Again, I'm generalizing, not all, but we are sometimes shy. We are modest. We are a little bit scared of bringing out our thoughts, sometimes, and sharing our ideas or being proactive. So my advice to all the women folk today who are with us is that अपने ideas share करिए. आपके original ideas जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा value है. Please share your ideas, your thoughts with your leaders, with your seniors, with people around you. सबके साथ share करिए. आप अपने मन में रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होएगा. दूसरी बात, ladies, we must talk more. We must talk about all the good things we are doing. आपने अपने 2 colleagues को बुलाया, बहुत अच्छा लगा. But sometimes we are shy of talking about ourselves. We are shy of talking about our achievements. I think we have to let go of that. In today's world, कोई आपसे आके नहीं पूछेगा जी आपने क्या करा. आपको खुद भी अपने बारे में सबको बताना चाहिए. So I think that is somewhere our young girls, our women must come out. They must talk about all the good things they are doing to their seniors, to their colleagues, even outside in the community. So this is something we need to work on, which I think some of our other colleagues do much better. So I thought, let me also talk about what we should do more, what we can give more. And this is all from my personal journey as a professional. So I just thought I'll share, Sarah, those were a few thoughts I wanted to share today with you all.
Wonderful, Neeru. I think those are some very important insights, and I think almost all of us can relate with those. अगर मैं चंद्रमा जी से पूछूं या श्यामा जी से पूछूं तो मेरे ख्याल से वो भी कहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा बताना बहुत जरूरी होता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं। और कभी कभार हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि क्या बोलें, दूसरा क्या सोचेगा, किस तरह से इसको लेगा, पर बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने नीरू जी एक और चीज बोली, यू टॉक्ड अबाउट मल्टीटास्किंग। तो मेरे ख्याल से मल्टीटास्किंग भी एक चीज है जो हम बहुत अच्छा करते हैं, पर उसको करते वक्त हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। मतलब अपना ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, to kind of take care of one's health, one's well-being. So that somehow takes a back seat because of various challenges. तो उसको उसका ध्यान रखना, अपने मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो ही हम दूसरों की मदद कर पाएंगे, अपने परिवार की या अन्य सदस्यों की मदद कर पाएंगे। So I think those were wonderful points, Neeru, and it's absolutely great that you were able to join with us. और आप इतना experience अपने साथ लाती हैं। जब मैं आपका profile पढ़ रही थी तो tax was coming up like in every sentence. So I think it's wonderful that we ladies get together and share our experiences from diverse backgrounds. Like Shama ji is a SOS mother. Radha ji has joined us. Radha ji, it's wonderful to see you. Namaste. And also if you talk of Chandrama ji, so we all come from different backgrounds, but the key thread is what you have just mentioned, Neeru. Those points are simply wonderful. So thank you once again, Neeru, for joining in, and a very happy Women's Day, not only today, but always to you, Neeru. Thank you so much, and thank you once again for inviting me. Thank you. Radha ji, thank you for joining in. I believe now, Sarah, thank you so much for inviting me and giving me this opportunity. I'm really sorry for the technical trouble because I could not link earlier, though I've been trying for the last almost 1 hour. Oh. But it's been very nice to hear all your speakers, especially the mothers. And firstly, I would like to congratulate the SOS family and thank them, and especially the SOS mothers who joined today. It was such an amazing experience just to listen to the experience, and I've been very fortunate because I had an opportunity to interact with your SOS village in Bhimtal, and many years ago I also visited an SOS village in Ashram, Delhi. So like I've had 2 very wonderful interactions with your children and your mothers, and the whole SOS philosophy. I think it's wonderful, and I think in the government sector we really need to learn from SOS, and we need to modify our own institutions in that light. All those dealing with children in need. And now I would just like to say a few words about the topic which you have chosen today, which is very, very relevant. And because, as you know, the United Nations has given the Sustainable Development Goals, सतत विकास के जो लक्ष्य रखे हैं संयुक्त राष्ट्र ने, उसमें 2030 तक कुछ टारगेट्स रखे हैं। उसमें जो 5th लक्ष्य है, that deals with gender equality. But I strongly feel that all the 17 goals are it's not possible to achieve them unless we first deal with the issue of gender equality. Because if we see across the world, it's a very sad state of affairs, and we really need to wake up and do something. Like if you see child marriage, like there are about 60 million child wives in the world. I mean, this is the ultimate injustice to girls and women, I think. Domestic violence. There is no law to protect women from domestic violence in 49 countries of the world. In 39 countries, there is no equal inheritance for girls and boys.
There are no rights to give equal inheritance to women. Female workforce participation in India is very low. It's about 20% only. Whereas even our neighboring countries like Bangladesh is 30.5%, Sri Lanka is 34%. So in India, we need to really wake up on this. The SDG achievements are not possible unless we end violence in the world. And like, how do we end violence in the world? Because basically, see, we distinguish between man and human. Man is like an animal, like all living creatures. But living creatures, they only indulge in violence if they want to eat or to protect themselves. But unfortunately, even though we call ourselves human and we say that we are superior to other living beings, but because of the perversity which has crept into man's mind, by man I mean all mankind, it includes women also, ये जो विकृत मानसिकता है ये मनुष्य को पशु से बहुत नीचे ले जाती है. So basically we need to create a society where there is no violence. And because, we indulge in unnecessary violence in society. The best example of organized violence have been the terrible wars throughout human history. We faced so many wars, and even today we are seeing this war between Ukraine and Russia, which is such a tragedy. I was involved in the process of bringing the students back to our state. There are about 300 students from Uttarakhand who were studying in the various colleges of Ukraine. And, they have such sad stories of how they, tried to, run away from the war situation and how much they all suffered. And even now they're suffering. If we compare with other countries of the world, India is very fortunate because हमारा जो संविधान है, our constitution, संविधान और हमारे कानून महिलाओं को बराबरी देते हैं, बहुत हद तक बराबरी देते हैं. हम लोगों को वोट का भी अधिकार 1947 जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ 1952 में ही मिल गया था आजादी के बाद. तो शुरू से ही भारत में हम लोगों को वोट की बराबरी मिली हुई है. संविधान में हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें women are treated equally. There is no discrimination at all. The preamble of our constitution says we should give dignity of the individual. That has been given a lot of importance. And I think the dignity of women is what we really need to focus on now. What we need to do is move towards social equality. Because even though we have political equality, we have constitutional equality, लेकिन अभी समाज में जो मानसिकता है, सामाजिक बराबरी के लिए जो मानसिकता अभी हमारे समाज में है, ये बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है. इसमें मानसिकता को बदलना बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है. और उसके लिए मैं अपना कुछ पर्सनल एग्जांपल्स आपको देना चाहती हूँ. I am in a government service. I am an IS officer of the 1988 batch, and I've been working for the last 34 years. Throughout my service, I have found lots of examples of discrimination against the girl child. जन्म लेने से पहले ही हम अपनी बालिका को उस अधिकार से वंचित कर देते हैं. जो फीमेल फीटिसाइड की समस्या है, ये मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर्स पे देखी है अपनी जॉब के दौरान. और ये आपके आसपास भी होता होगा, आपके पड़ोस में, आपके समाज में, आपकी लोकेलिटी में. मेरा अनुरोध है, यहाँ पे इतनी अच्छी सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, माताएं जुड़ी हुई हैं, हमारी SOS की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर्स जुड़ी हुई हैं. और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अपने SOS के जो फैमिलीज हैं उसमें बहुत अच्छे वैल्यूज बच्चों को दे रहे हैं, जहाँ पे कोई फर्क नहीं हो रहा है बेटा बेटी में. लेकिन अभी समाज में अभी भी बहुत ज्यादा फर्क है. जब कोई माता गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा सोसाइटी का और परिवार का प्रेशर होता है कि यू हैव टू गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड. मतलब ये प्रेशर उस पे थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी रहता है. और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है. तो जनरली फर्स्ट चाइल्ड में लोग इतने दुखी नहीं होते अगर पहली बालिका पैदा होती है, लेकिन सेकेंड बालिका को वो जन्म ही नहीं लेने
अनुमति देते हैं. So this is a big tragedy in our society. I would really request all of you to please join hands and to please let the second girl child be born. और ये हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, महिला बाल विकास विभाग मेरे पास बहुत लंबे समय तक रहा, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया. आंगनवाड़ी वाड़ियों के माध्यम से आंगनवाड़ी वर्कर्स जो घर घर जाती थी और जहां भी सेकंड प्रेगनेंसी होती थी उसको हम लोग ट्रैक करते थे कि उसका अबॉर्शन ना कर दिया जाए. और इसके बाद जो दूसरा इंटरवेंशन जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है वो चाइल्ड मैरिज में, क्योंकि अभी भी हम लोगों की लगभग 40% बालिकाओं की इस देश में हर साल चाइल्ड मैरिज हो रही है. 13, 14, 15 साल में बालिकाओं की शादी हो जाती है. उसके बाद जो बच्चे भी होते हैं वो बहुत वीक होते हैं. बहुत सारी चाइल्ड मदर्स की चाइल्ड बर्थ में ही डेथ हो जाती है. तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी हम लोगों का अधिक है और इन्फेंट मोर्टेलिटी अधिक है, इसका बहुत बड़ा कारण है चाइल्ड मैरिज. तो स्पेशली जो लोग एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको ये देखना है कि जो बालिकाएं हमारी क्लास 8 तक पढ़ रही हैं, क्लास 8 के बाद जब भी गर्ल्स स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं तो इनवेरिएबली उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है. तो प्लीज 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 जहां भी आपको ऐसी कोई खबर मिले कि लड़की ने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, प्लीज इंटरवीन. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा हमसे क्या मतलब है, क्योंकि हमारे परिवार में ये नहीं हो रहा. हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं. I was very fortunate. I was born to such wonderful parents, and we were 2 sisters. I'm the elder. I have a younger sister, and there was no discrimination whatsoever. We were brought up equally with full confidence in ourselves. We were told you can do whatever you want to do. Similarly, I have 2 daughters, and I am really blessed. I am so proud of my girls, and we have given them the same freedom that we had. They are free to do what they want, to try to make a better world, to a more just world. And I would just like to end with a quotation from a famous Nigerian writer, विश्व प्रसिद्ध नाइजीरियन लेखिका हैं चिमामंडा अडीची. आप लोगों ने इनकी कुछ किताबें भी पढ़ी होंगी. What she has said today on Women's Day, I would like to ask that we begin to dream about and plan for a different world, a world of happier men and happier women who are true to themselves. And this is how to start. We must raise our daughters differently and we must raise our sons differently. तो बहुत बड़ा रोल इसमें हम लोगों की परवरिश में है. अभी हम लोग बालिकाओं की परवरिश अलग तरीके से करते हैं, बालकों की अलग करते हैं. तो यहाँ पे इतनी सारी बहनें माताएं जुड़ी हुई हैं. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिनके पुत्र हैं, आपके अगर बेटे हैं, तो प्लीज 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 मेक देम सेंसिटिव टू विमेन. प्लीज टीच देम टू रिस्पेक्ट विमेन, टू अलाउ एवरी ह्यूमन बीइंग टू लिव विद डिग्निटी. And that will go a long way in making a safer society, in making a better world, in having more sustainable development. And once again, I would like to thank Mr. Kar and Sara and your whole team for inviting me today. Thank you very much. Thank you, ma'am. Radha ji, thank you so much. And I think the quote with which you ended your talk, it's a very powerful quote, and it actually sums up the essence of gender equality and equity. And I think there were 2 points which were very important. Of course, all of them were, but which remained with me specifically. One was, आपने कहा जैसे child marriage या infanticide. I think इसमें बहुत जरूरी क्या है, behavioral change. So a lot depends on, आपने जैसे ये भी बोला कि आप जिनके पुत्र हैं उनको कैसे सेंसिटाइज करना है, मतलब उनको कैसे इस बात का आभास दिलाना है कि चाहे लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कैसे उनका आदर सम्मान करना है. तो जो behavioral change है वो स्वयं से शुरू होता है. और शायद इस वजह से इसके अंदर ये सबसे बड़ी चुनौती भी है
कि क्योंकि ये स्वयं से शुरू होता है, तो अपने आप को बदलना ही सबसे बड़ा कभी कार्य होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या आपके विचार हैं? Behavioral change per se. I agree absolutely. Sarah, you are absolutely right. Behavioral change is the key, is the answer to these problems, and we have to begin with ourselves. So, some of your mothers also spoke earlier, जो SOS mothers, उनका भी हम सुन रहे थे कि हमें अपने अंदर एक confidence develop करना होगा. All women, all girls have to develop a confidence within ourselves, and we have to learn to speak out. Generally what happens is बचपन से लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं है, तुम दूसरे घर जाओगी, पराए घर जाओगी, शादी होके चली जाओगी, तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं। तो हम लोगों की जो महिलाएं और लड़कियां हैं, जनरली आप कहीं भी एक सामाजिक गेट टुगेदर में देखेंगे, तो अगर if she's sitting with her husband, especially I've noticed this, it's usually the husband who talks. इनफैक्ट हम लोग रूरल एरियाज में भी, जैसे हम लोगों की प्रधान है, नाउ इन उत्तराखंड वी हैव मोर देन 50% विमेन प्रधान, व्हिच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। तो गांव की प्रधान भी अगर कहीं बैठी होगी और उनके साथ अगर उसका पति भी बैठा है, तो वो अपने पति के सामने बिल्कुल नहीं बोलेगी, लेकिन अलग से जब आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगी। तो हम लोगों को सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा अपने आप में जो चेंज लानी है, वो ये है कि हमें भी बोलना है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, और हम लोग सिर्फ ये सोच के कि हमारे पति को बुरा लगेगा या हमारे पिता को बुरा लगेगा, वो बचपन से शुरू हो जाता है। अपने फादर के सामने भी लड़कियां बहुत कम बोलती हैं, क्योंकि वो ये देखती हैं कि उनकी मदर्स नहीं बोलती हैं और फादर ज्यादा बोलते हैं। एक घर में फादर इज सपोज्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, whereas actually it's the mother who is doing all the work of the family and she's the anchor of the family. तो सबसे पहले हम लोगों को बोलना सीखना होगा, और हम लोग जनरली बहुत पीसफुल होते हैं। See, I think women are by nature more peaceful because they're nurturing, they're mothers. They want to nurture life, nurture society. That is why they say that, if women were ruling the world, there would be no wars. But unfortunately, it's the men who are ruling the countries, and they are presidents and prime ministers, so they are leading to so many unnecessary wars. So now we also have to learn how to fight, because we generally, in fact, I would like to admit that I also suffer from this. Like, if there's an argument in the family, I withdraw. I would rather leave the room and go away. If my husband is in a bad mood, I would not like to engage. That is my weakness, because I'm a very peaceful person. I don't like arguments, and I don't think it leads to any, positive conclusion. But my younger daughter, in fact, she is studying gender studies in her master's. Now she is the activist who motivates me. She keeps telling me, no, whenever you feel something inside, don't suppress it. Tell your husband, tell my father that this is what you said, this hurt me. Please don't say this in future. So I'm trying to do that now. I'm learning. So we have to learn to speak. We have to learn to fight. We have to begin with ourselves. Sorry. Wonderful, wonderful. I think those were some very powerful insights, and without taking much of your time, because you've been so kind to give us already so much of your time. One question, you are an IAS officer. आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपका एक बहुत ही बेहतरीन करियर है, और वो मैंने सवाल चंद्रमा से और श्यामा जी से भी पूछा है कि जो बैलेंस है जिंदगी में, वो आपने कैसे निभाया, कैसे करा आपने इसको, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं प्लीज। सारा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, because this is something which my husband also, he tells me that you are the most successful woman in the world because you have maintained this work-life balance so beautifully. Because basically, since I told you, my parents also didn't have a son, we are just two daughters. So in fact, my husband and I, we asked my parents to come and stay with us. So for the last 20 years, they stayed in our house in Dehradun. And I think that helped me to maintain my work life. So I would just like to tell all working women that, the family support that you get,
is something so wonderful. And that really helps you. And see, there is no, I think, I do not agree with Indra Nui. Aapne unki book padhi hogi. Where she said, you cannot have it all. Because I think she is working in the private sector. So thoda fark ho jata hai. I am in the government sector. The government is a very kind employer. So जो welfare measures हम लोगों के government देती है अपने women employees को, I think that's the ultimate. So in fact, I would like to ask all our SOS mothers, please motivate your girls to join government service, because it's a very good career for girls. It really helps you to maintain the work-life balance, because we work, I mean, I don't know. Actually, I'm not very good at speaking, so I'm not able to give my ideas. But, my parents being with us helped a lot with the children. They always had the grandparents at home. And plus, fortunately, I have a very sensitive husband also who's very positive about empowering women. So whenever I was not there, he was there. And I tried to, make it a point to always be there for my children. So, I made that my priority. Unke school mein agar kabhi jana hai, so I would always go there. And along with my work, see, what we did was, my husband and I, we have only two things in our life: our children, our family, and our work. And we did not go in for a lot of socializing. Like, we didn't go to parties, we didn't go to clubs. So I think that time, that evening time, was always there for the children. And so we just went home from office, and I think that helped me to maintain my work-life balance. In fact, my mother went through a lot of they are both no more now, my parents, but I think their blessings are always with me. My mother got cancer. She had very difficult cancer treatment, but through it all, we managed. I used to go and stay with her in the hospital at night, and from the hospital, I would come straight to the office. So things like that, we just somehow managed, and we gave them the best care possible. My father got dementia in the end. He needed a lot of care. He passed away last year at 90 years. But I'm so satisfied that, we gave them the best care possible. And I think that will only be done if we are daughters. Because, I don't want to discriminate against boys or men, but the kind of care that daughters can give to their parents, especially if they have health issues. So I think that's I've been very blessed. I could take care of my parents as well as my children. My mother-in-law also stayed with us. We had both sides, because my father-in-law passed away earlier. I took care of my mother-in-law also like a mother. So I think, we just got the blessings from all sides, and I could maintain this work-life balance for the last 35 years. And therefore, I would really ask all of you, please motivate your SOS girls to join government service. And if you need any counseling from my side, I'm always available. My number is there. You can share it with all your mothers, all your daughters. They can call me anytime. I would love to mentor them, counsel them. I would love to make them all IS officers like me. And I'm sure we'll create a better world with more officers, lady officers like me. Thank you so much. Thank you, Radhaji. That was a wonderful discussion and rather a wonderful interaction. And we have another lovely lady here with us today. And she is Miss Ira Singhal. And Ira ji she's really an achiever. I'll just introduce her quickly. So Ira Singhal is the first person with disability to top the prestigious civil services examination in 2014. In her 6 years of career as an IAS officer, she has handled various profiles like DC, Keshapuram and Karol Bagh zones, Director Education, Director Community Services, Director Press and Information, Joint Director Department of Women and Child Development, and many, many other prestigious profiles. She's the brand ambassador of the Department of Disability Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and also the brand ambassador for the Ministry of Child and Women and Child Development, Niti Aayog. Besides this, Iraji is on the National Panel for Accessible Elections, Election Commission of India, and her innumerable awards include India Today's Women of the Year 2015, President's Gold Medal for topping the IAS training,
First Ladies of India Award by the Ministry of Women and Child Development, Government of India, among many others. So along with Radha ji, we have Ira ji here today with us, and Ira ji, the floor is all yours. Over to you, ma'am. Thank you so much for having me, and good morning, ma'am. It was wonderful listening to you. I think on this Women's Day, I just have one message for all the little girls who might be watching, who might be listening. आपको लाइफ में बहुत बार लोग बोलेंगे कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से जी सकते हो, आप लड़की हो तो आपको ऐसे जीना है, आपको वैसे जीना है, ये आपकी बाउंड्रीज हैं. बट आपकी सिर्फ वही बाउंड्रीज हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं. अगर कोई आपको कहता है कि आपको ऐसे जीना चाहिए और वो एक लड़के के लिए भी इतना ही एप्लीकेबल है, तभी वो आप अपने ऊपर लगाइए, नहीं तो उस एडवाइस को ना लो. बिकॉज तुम्हें तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो कोई और तुम्हें कैसे जीना है ये बता भी नहीं पाएगा. आपको लोग गाइड कर सकते हैं, आपको लोग सिखा सकते हैं, बट बस वो सीख आपको एक अच्छा इंसान, आपको स्ट्रॉन्ग, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए होनी चाहिए, ना कि इसलिए कि आप लड़की हो. एंड लाइफ में मोस्टली लोग आपको यही बोलते हैं कि यू नो बिकॉज ऑफ योर जेंडर आप ये कर सकते हो या वो नहीं कर सकते हो. मेरा मानना है आप वो कर सकते हो जो आप ठान लोगे. तो जिस दिन आप अपने लिए सोचोगे कि मेरी ये लिमिटेशन है या मैं ये नहीं कर सकता, उसी दिन आप वो चीज नहीं कर पाओगे. और किसी और के कहने से आप अपने आप को डिफाइन अगर करने लगोगे, तो जितनी उस इंसान की आपके लिए सोच या इच्छा है वहीं तक जा पाओगे. जब हम लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा ये होता है कि हम वैसे जीने की कोशिश करते हैं जैसे दुनिया चाहती है. हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे ऐसे जियो, लोग क्या कहेंगे वैसे जियो. लड़की हो तो ऐसे आपको बात करनी चाहिए, ऐसे आपको ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे अपनी ओपिनियंस मत दो, ये करो वो करो क्योंकि तुम लड़की हो. पर अगर आप ऐसी बातों के साथ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, तो आप दुनिया में जो चेंजेस ला सकते हो, दुनिया को जितना एक अच्छा बना सकते हो, जिस लेवल पे आप अचीव कर सकते हो, वो आप नहीं कर पाओगे. तो मेरा मेन मैसेज ये है कि don't let the world define your boundaries, don't let the world tell you who you can be. The only person who knows you is yourself. The only person who has lived in your shoes is you, who thinks like you is you, who really knows your talents is you. Then how will the world be able to tell you what you can be? You're the only person who can do that. So don't set limits for yourself based on what the world says you should become. And that was something very applicable to my life. I as a girl with disabilities, दुनिया आपके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज सेट कर देती है. दुनिया बहुत सारे पैरामीटर्स लगा देती है कि आप लड़की हो और उस पर से आप डिसेबल्ड हो, तो आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. बट आप उसी दिन नहीं कर पाओगे जिस दिन आप मान लोगे. आपकी सोच से ही सब कुछ होता है. अगर आज आपको रियलाइज हो तो आधी से ज्यादा बीमारियां भी हमारी सोच से होती हैं. तो अगर आपकी सोच अपने लिए ही खराब है तो किसी और के लिए कैसे अच्छी होगी? अगर आप अपने लिए ही आगे नहीं सोच पाओगे, अपने लिए ही प्लान नहीं बना पाओगे, तो आप किसी और के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे. तो अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है, सक्सेसफुल जीवन जीना है, तो आपको अपने लिए तो पहले सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा. अपने लिए अपने डिसीजंस लेने की आदत डालनी पड़ेगी. और किसी और, देखिए, कभी कोई ऐसी चीज मत करिए जिससे किसी और के जीवन को नुकसान पहुंचे, पर वो भी चीज किसी और को भी मत करने दीजिए कि वो आपकी आकांक्षाओं को, आपके जीवन को, आपकी इच्छाओं को नुकसान कर सके. तो माय वन मैसेज टू ऑल गर्ल्स ऑन दिस वुमेन्स डे इज be who you decide to be. Don't be somebody that the world expects you to be, as long as that's a good person. Yes, be a good human being, be someone who doesn't harm someone. Ira, these are really very inspiring words that you have just mentioned. And when one looks at your profile and the journey that you have had till date, one can very well imagine the kind of challenges you may have faced and how you have been able to circumvent them, to mitigate them and reach where you are today, and you're being able to impact lives. So it's simply wonderful to see that. And my one question to you would be that,
one faces multiple challenges during the course of life. बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और कभी हम थक हार जाते हैं, हम सोचते हैं अब नहीं, और अब नहीं होता, अब इससे ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, अब जीवन मान लो थम सा गया, वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं। तो क्या आपने कैसे इन चीजों का सामना किया? आपने कभी इस तरह महसूस किया, और अगर किया हो तो किस तरह से आपको लगता है इसका सामना करना चाहिए? आई थिंक मेरी लाइफ में एक चीज जो शायद अलग हुई वो ये थी कि पहले दिन से ही एक एक्स्ट्रा स्ट्रगल एडेड थी। और पहले दिन से ही ये था कि अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तो आप कहीं पे कुछ भी नहीं पा पाओगे, क्योंकि एक जजमेंट जो आपकी शक्ल सूरत का और आपकी डिसेबिलिटी का मिलता है वो मुझे बचपन से मिल रहा था। तो मैंने तो हर समय लोगों की बायसेस और परसेप्शंस को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना सीख लिया था। शायद उस वजह से जब भी कोई मेरे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से पहली बार कोई मुसीबत आई है। मोस्टली लाइफ में कोई ना कोई बात पे हमेशा संघर्ष रहा है, हमेशा प्रॉब्लम रही है, हमेशा डिफिकल्टीज रही हैं, एंड तो इसलिए शायद उनसे लड़ना भी सीख लिया, उनसे हारना नहीं सीखा, क्योंकि हार के किसी और का नुकसान नहीं होता है, आपका ही है। एंड मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में हर बैटल ले लो और हर चीज में लड़ लो, बट कई बार कुछ चीजें आपको इतनी जरूरी अपने लिए बनानी पड़ेंगी कि आप उनके लिए लास्ट मिनट तक लड़ो। मैं पर्सनली जो एक चीज करती हूँ वो मैं हर सिचुएशन में ये याद रखती हूँ कि मैं किसी और को नहीं बदल सकती, मैं किसी और के एक्शंस को नहीं बदल सकती, मैं किसी और की सोच को नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ एक इंसान को बदल सकती हूँ, वो खुद को है। तो मैं हर सिचुएशन में ये सोचती हूँ, क्या मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी, क्या मैंने सही रिएक्ट किया, क्या मैंने सही डिसीजंस लिए, और मैं इस मोमेंट पे क्या बदल सकती हूँ अपने अंदर या अपने एक्शन से जो वो सिचुएशन बेटर हो जाए। हर समय वो हो नहीं पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, बट I try till the moment that I can find something to change from my actions or in myself. And I also am a very, very, I'm somebody who's extremely honest with themselves. I'm very honest about my abilities, about who I am, about the way I think, and I acknowledge all my failings to myself. I acknowledge all my faults to myself. And because of that, it's easy for me to see myself objectively in every situation. So if you can, be truthful with yourself about who you are, it becomes easy to work through situations, because like I said, the only person on whom you have control is yourself. So, and don't give that control away to anybody else. So, what I do in every situation is I analyze and I check, can I do something to change this situation? Can I do something in my own behavior which will make this better? Is there anything that I can, do to solve this? And then I do that till the moment I can change, something in myself. But yes, there will always be roadblocks that you will hit. Try to analyze what are the consequences if you, if you leave this situation and go away, because you don't have to be everywhere. You can leave those situations and walk away. For example, all the students currently in Ukraine from India, don't stay there and keep fighting. Move, leave, because there is a bigger thing at stake. So it's not a bad idea to leave certain situations, but make that call smartly. Make that call after having thought, what will you do if you leave that situation, and how it's going to affect you in the long run. So I always look at long run consequences of my actions, long run consequences of my decisions, and then decide what my actions and how I should react. So, and I think being a person with disability in an Indian society, you kind of learn that life is a struggle, and you have to do that at every step. You have to stand up for yourself. You have to make those calls for yourself, and you have to learn how to take decisions and learn how to overcome challenges, because the world will not give you opportunities. You have to create them for yourself. Ira ji, thank you so much for that. And I would like to now come to Radha ji, to you. As you just heard that Ira said that, you have to create those opportunities for yourself.
And also in professional life, there are numerous challenges that one faces, and one has to kind of mitigate those challenges, find solutions. So what are your thoughts on this? Like Ira said, she has learned from childhood onwards to face challenges, to have this honest conversation with the self. So I think that is very important. What are your thoughts on that, Radhaji? First of all, I would like to congratulate Ira, and what an inspiring personality she is. And I'm so glad you called me for this seminar, and I heard her speaking and saw her. Ira, God bless you. You are such an inspiration. And I'm so happy to meet you. And I would love to meet you in person also. Maybe we can come through sometime. But what you said, it really it's like we are learning all the time. I've learned so much from what you spoke just now. And you are absolutely right. I mean, Ira is absolutely right. We have to decide for ourselves in every situation what we have to do. And especially, like you asked me, like there are lots of challenges in our job also, because in a democratic system, the bureaucracy has to work under an elected government. So we are not the government, we are only assisting the government. So like every 5 years you have elections, and then there will be some, like I'm working in the state government, I think Ira is working in the central government. So wherever we are, there's an elected government on top, there are politicians. They have their own compulsions. And very often, you'll find there is some amount of conflict in the system where maybe some minister or some chief minister wants you to do something which is against the rules, which is maybe not illegal, maybe not ethical. So at that time, you have to decide, you have to listen to your conscience. But see, if you are clear that you will only do the right thing and take the right path, then after some time, even the political government understands that, this officer will always remain upright. She will do the right thing. She will follow the laws. So generally, they do not pressurize you too much. But see, the price that you may have to pay is that they may remove some department in which you are working, because if they don't like for example, WCD. I was in WCD. I mean, I'm not taking any names, and I think this is a in-house kind of conversation. So my minister, who was also a lady, she didn't like my working because I basically follow the straight path, and she wanted a lot of things done which would have harmed the system and the department and led to some kind of unethical practices. So I just stuck it out. I did not give in to her. So finally, and I told her also, I said, ma'am, you please get some other secretary, because I will only follow the rules. So finally she got somebody else, and she was a very young minister. She was almost like my daughter. Like the age difference was so much. Like she was just 35 and I think I was 56 or something, almost double the age. But it was interesting because, see, as long as you are clear about what you want in life, whatever pressure comes, there's a way to withstand the pressure. And the only thing is they will remove your department, they'll give you some other department. Or for young officers who are in the district, they're district collectors. If somebody is unhappy, they will transfer them from the district to the secretariat. It doesn't matter, because wherever you are, there is so much work to do. There is so much. If you want to do something, you want to help people. Like my sort of aim in life through the service has been to help people, either through my government work or apart from that. So I mean, I help a lot of orphan children. In fact, that's why I'm so much in love with SOS, because I mean, what you are doing with our orphans is wonderful. So the orphan girls who are in our government institutions, I try to counsel them, mentor them, see that they get into higher education and jobs. And plus, my another area of interest has been in handicap welfare. I mean, differently abled welfare, which is very, very satisfying. And I've been doing that since a long time, since I was in Andhra Pradesh, in looking after that department from 97 to 99. So I got interested, and I mean, the kind of response you get, and when you see, these children
completely becoming self-sufficient, working on their own, and they are so loving, so responsive. So these are two areas which gave me a lot of pleasure, working in with orphans, Absolutely. the differently abled. So Absolutely. it's been a wonderful journey. I've been working for 35 years now, and it's amazing. If you Great. keep your boundaries fixed and you know what you want in life, then nothing phases you out. Because Yes. you know what the problem with a lot of IS officers is that they confuse the chair with the person. Like, suppose my designation is additional chief secretary, but that's only a designation. That's only a chair. Somebody is the chief secretary. That's only a chair. Somebody is the DGP. That's only a chair. That's not the person. So Right, as a right. person, you don't have to confuse yourself with your chair. Absolutely. I'm only Absolutely. Radha. I'm the same as I was when I was a student. I'm still the same. As long as you don't change your basic value and keep your principles are there. Yes, absolutely. So in fact, I would like to bring this question now to Chandrama ji. Chandrama ji, जैसे आपने इस चर्चा में सुना कि बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है और आपने भी अपनी यात्रा के बारे में बताया काफी कुछ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि आजकल की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी और उनके लिए जो उनकी चुनौतियों का सामना करते हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी, जो प्रोफेशनल और पर्सनल जो बैलेंस है बेसिकली उसके बारे में? यस मैडम, अभी हमारा तो बच्चा है ना मैडम, छोटा तो है, अभी लाइफ में भी बहुत सारा मकसद है हमारा है चलने के लिए, और भी आगे करना पड़ेगा। तो लड़की रो लड़का रो घर में एक साथ देखना चाहिए, एक साथ देखेगा तो कभी भी आगे बढ़ सकता है। लड़के को अलग तरीका रखना, लड़की को अलग तरीका नहीं करना है कभी भी उतना ही। एक एक घर में देखना, लड़की को मदद कर सकती है, लेकिन लड़के को मदद करने के लड़का नहीं आएगा, लड़की आना चाहिए, लड़की आना चाहिए। अभी एक बात बोलती हूँ, अभी हमारा भाई लोग कोई रहे तबीयत ठीक नहीं तो कोई लड़का के देख सकता है, उसको नहीं देख सकता। सफाई करना है, नहलाना धुलाना तो कोई नहीं आता, लड़की आना चाहिए, लड़की को आगे रखना चाहिए। लड़की को मकसद एक ही है, कभी भी माँ रो, बहन रो, बीबी रो, एक ही तरह का देखना चाहिए। अभी मेरा मकसद और भी आगे बढ़ना, तो मुझे अभी सपोर्टिंग है। मेरा घर में मेरे एक ही लड़का है, 7वीं क्लास पढ़ रहा है, 13 साल का लड़का है। मेरी माँ है, मैं 3 ही लोग हैं घर में रहते हैं। और मैं हमारा एरिया में काम करने जाती हूँ, उधर पेरेंट्स को सभी लोग काउंसलिंग देती हूँ। मैं बच्चा हो या तो लड़की रो लड़का रो, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको और काउंसलिंग देता आंगनबाड़ी में। और मैं 4 साल से आशा वर्कर काम करी थी, टाई कार्ड बना के दी हूँ। और प्रेगनेंसी रहने के टाइम पर मैं क्या की, उनको घर में ही बच्चा नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल को जाना चाहिए, आंगनबाड़ी में जाके लिखा कर उनको टाई कार्ड बना के दिया है। और टीटी इंजेक्शन डाला, उनको बहुत लोग को सपोर्ट किया है उधर। और एसएसजी ग्रुप में उन लोग जमा इन्वॉल्व किया करके रखा, इन्वॉल्व किया है। और उन लोग के लिए बोला फैमिली प्लानिंग भी ऑपरेशन करके चुका। 2 बच्चा बस से ज्यादा नहीं करना चाहिए, लड़की रो लड़का रो, उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनको मकसद है कभी भी पढ़ेगा तो वो लोग अच्छा रहेगा, पढ़ना चाहिए और कुछ हुनर सीखना भी चाहिए वो लोग। क्यों तो लड़के को एक तरीका रखता है ना, लड़के को बहुत आगे नहीं रखना है, लड़की को छोड़ेगा तो वो लोग आगे बढ़ सकता। कभी भी हिम्मत से रहना चाहिए। और उनका नॉलेज क्या है पूछना चाहिए। भाई को बच्ची घर में रहती है ना, उनका नॉलेज पूछना चाहिए, उनको हमें हिम्मत से रखेगा तो बाहर गए तो अभी आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद चंद्रमा जी उन वेरी प्रेशियस वर्ड्स के लिए। श्यामा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अभी जो चंद्रमा जी ने कहा, जो ईरा जी ने कहा, राधा जी ने यहाँ बताया हमें, उसके साथ आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, मैं इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि बेटियों को और बेटों को इक्वल ही मौके देने चाहिए, दोनों बराबर है हमारे लिए। तो जितना बेटी जितना बेटा है, अगर हम बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बेटे को ही बढ़ाना है। और दोनों को ही कभी ये नहीं सोचना है कि बाहर कोई लड़की है तो वो लड़की नहीं, कोई और लड़का ना समझे उसको। कोई लड़की है तो वो बहन है, बेटी है, जो भी है, उसको बराबर का उसको भी साथ देना चाहिए। और कभी ऐसे मुसीबत आए, चाहे लड़का हो, तो सामने लड़की को मुसीबत आती तो उसको बराबर उसका साथ दो। और शिक्षा, लड़कियों को खास तौर पे शिक्षा में जितना हो सके कोशिश आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि वो देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद श्यामा जी। Ira, one last question for you. It's very often spoken about breaking the glass ceiling and women are going beyond that and so on and so forth. What are your thoughts on that? Is this actually the case right now? Is it becoming the case? How does the future look like? Any thoughts you would like to share with us before we end?
I think it's because of all the amazing officers who've come before us, like Radha ma'am and all of them, who made it much easier for us. My generation doesn't feel that bias, but I'm sure that theirs did. So today, in today's world, the only glass ceiling that exists is in your thoughts. आप अपने लिए जो लिमिट बना लेंगे, आपकी लिमिट वो बन जाती है. दुनिया अपॉर्चुनिटी तो प्लाटा पे किसी को भी नहीं दे रही, पर जो लोग अपने पाथ पे लड़े रहते हैं, जो लोग ठान लेते हैं और जो लोग राइट पॉजिटिव इंटेंशन से मेहनत करते रहते हैं, उनके लिए सीलिंग सिर्फ वही होती है जो उनके अपने इमेजिनेशन और अपने प्लान्स में होती है. So I don't think there is a glass ceiling. Because women have entered the army, women have fought and entered the army. I've actually met those girls who took up that case and who've created that path for all the others to come. So today that glass ceiling is only as far as your imagination for yourself exists. And the world will give you the opportunity when you show that you can do it. And how do you show you can do it? When you believe that you can. The world will only see you the way you see yourself. दुनिया आप में वही देखेगी जो आप अपने आप में देखते हो, क्योंकि आप वही दिखाओगे. तो अगर आप अपने आप को capable, talented and equal दिखाते हो कि आप वो कर सकते हो, तो दुनिया मान भी लेती है और आपको वो opportunity भी मिल जाती है. तो I think that ceiling doesn't exist anymore. जो आप limit अपने लिए set करोगे, बस वही रहेगी. Wow. So with those wonderful words, I would like to hand over the floor to Mr. Kar. Mr. Kar, would you be so kind to, sir, present the vote of thanks and conclude this great panel discussion? You're on mute, sir. Thank you, Sarah, and thank you, Radha ji, Ira ji, Shama ji, and Chandrama. I think each one of them has left impressions on their thoughts. And what I would like to end and share here that this gender equality has to start first in each family, and each individual first to imbibe this and start exhibiting in their own life one at a time. And then slowly they start influencing others through their actions. As far as the SOS Children's Village is concerned, it is our endeavor, ये हमेशा हमारा कोशिश रहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना. और इसमें हमारे जो माताएं हैं जो SOS परिवार के साथ जुड़े हुए हैं या जो केयर गिवर से फैमिली स्ट्रेंथनिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, फैमिली स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, उनमें हर बच्चों के लिए एक सपना होना चाहिए और वो सपना वो अपने बच्चों में फिर लाना चाहिए और उनके अंदर एक विश्वास जगाना चाहिए. और हमारे संस्था की ओर से ये कोशिश होना चाहिए अपॉर्चुनिटी उनको देना और एक ऐसा परिवेश देना, एक वातावरण देना जो लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव हो. कभी कभार हम रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट दे देते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलते हैं डोंट डू दिस इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम डू दिस. सो हम जरूरत से ज्यादा बोले ये चीज कीजिए, ये नहीं कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो. सो आई थिंक हमारा जो सोच है उसमें पहले बदलाव लाने का बहुत जरूरी है. आज के दिन में अगर हम सिर्फ SOS परिवार को देखें या बाहर देखें, सोच में थोड़ा परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन उतना अभी पर्याप्त नहीं है और नॉट इनफ. जबकि हर बच्चों में जो अपना जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब उनके अंदर एजुकेशन होता है, उनके अंदर स्किल होता है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बनता है. मैंने देखा हुआ है हमारा परिवार सशस्त्रीकरण योजना में हमारे काफी केयर गिवर्स वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे और उनके जो परिवार में, उनका जो कम्युनिटी में उनका जो सोच था, उनको जो तरीके से लोग उनको डील कर रहे थे वो एक अलग तरीका था. द मोमेंट उन्होंने फिर उनका अपना वेरियस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के माध्यम से जब इनकम आना शुरू हुआ, उनका अपना बैंक अकाउंट खुला, जब उन्होंने अपना इनकम अपने बच्चों के लिए खर्चा किए, यू सी ऑल द चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी चेंज. तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन के साथ एक स्किल दें, उनको एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पहले बनाए कि दे शुड लुक फॉर ए
so that they are economically independent. And then I see it will be more and more they will come forward, and it will create a peaceful society. और जरूरत से ज्यादा हमारे अगर लड़कियां बहनें बाहर आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, it will also contribute to the development of the society. So with that, I special thanks to all the panelists and thank you for joining in today's discussion. Thank you. Thank you so much. Thanks, Thank you for Piraji, Radhaji, Chandrama. Thank you so much. Shamaji, thanks a lot, Christo and IT team for all the support that you have been giving to make this possible. So a wonderful Women's Day ahead, and every day is Women's Day actually. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye.